गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्शन परफेक्शन। तो आज फिर से हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए, जिसका टाइटल है इंडिया इज रिक्लेमिंग सुपर पावर टू सुपर पावर, कैरोलिना गोस्वामी। हाँ, और जिस चैनल ने ये वीडियो बनाई है वो है इंडिया इन डिटेल्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन। थोड़ी पुरानी वीडियो है, हाँ 2019 की है। तो अब तक खासा चेंज आ चुका होगा, तो शुरू करते हैं। India is going through a massive transformation. The 21st century India is responding to globalization, and this is reflected in its transforming cityscapes. Mumbai, the national capital region. Kolkata, Chennai, कोलकाता में सारी लेक्स थी। Hyderabad, Bengaluru. The change is becoming more and more visible. ये सारे cities तो हम The cover कर country चुके has हैं brought अपनी videos में। 271 million people out of poverty between the years of 2005 to 2016. Standard Chartered's long-term forecast expects India to become the world's second largest economy by 2030, overtaking the US and becoming second only to China. It should be noted that India has already become the third largest economy in purchasing power terms, and in nominal terms, it is the sixth largest in the world. According to the Center for International Development at Harvard University, the economic pole of global growth has moved over the past few years from China to neighboring India, where it is likely to stay over the coming decade. In terms of economic progress, is India becoming the next China? The Beijing-based Chinese think tank, Unbound, thinks so. According to Unbound, China needs to seriously consider and study the rise of India's economy and India's competitive advantage. India, an ancient land with growing young population, is an emerging market power. It is entirely possible for it to become the next China and poses great attraction to the world's capital. The Chinese think tank's apprehensions are not unfounded. Leading international business leaders, think tanks, and global CEOs now consider India as one of the most attractive destinations for investment and technology transactions. What are the conditions that are favoring India? What are the factors that have brought India to the world's center stage? What is it that makes India one of the largest growth engines in the world? My name is Karolina Goswami, and in this episode, you will become familiarized a little bit more with the world's largest democracy and the country which is going to play a key role in shaping the future of our planet. India is the number one offshoring destination in the world, accounting for approximately 55% market share of the global services sourcing business. Indian IT companies have a presence in more than 80 countries, and Indian IT giant TCS is set to become the world's third largest IT services company. India has the world's third largest startup ecosystem. It is expected that by 2034, the Indian e-commerce industry will overtake the US to become the second largest e-commerce market. India already has the second largest telecom network in the world, and it is expected to have a total internet user base of more than 800 million by 2021. India has more than 250 million school-going students, which is more than any other country. The country has become the second largest market for e-learning after the US. A report by Ernst & Young stated that by 2030, the emergence of a robust higher education system would enable India to have more than 20 universities among the global top 200. In terms of scientific output, India ranks 5th in the world, and by 2030, it is expected to climb up to 3rd. In 2017, India ranked first in the Global Retail Development Index. By 2030, it is set to become the third largest consumer market. The number of operational airports in India will rise to 200 in 2 decades, and by 2024, it will overtake the UK to become the third largest air passenger market.
2024 में Ports, यूके को ओवरटेक rail, करेगा। highways. Ambitious infrastructure projects are rapidly changing the face of India. The country is already Projects building a बहुत बड़े-बड़े bullet लगाए। train infrastructure and it is also working on the Hyperloop. India's Hyperloop का भी हम state-of-the-art Train चल रहे हैं। 18, which is a semi-high-speed Train indigenously 18 built के भी train, आपने has Train already 18 पे found हाँ, many global admirers who have expressed an interest in बहुत importing बेहतरीन it. ट्रेन थी। India is already creating a web of modern urban metro networks in its big cities. After the completion of Phase 4, the Delhi Metro will become the third largest metro network in the world, with a total कई length कमेंट्स of आए कि approximately ऑलरेडी 400 से 450 अबव हो kilometers. चुकी है दिल्ली मेट्रो। With more than 7,000 freight trains carrying 3 million tons of freight daily and more than 12,000 passenger trains with 23 million travelers on board every day, the Indian Railways, with its 115,000 kilometer network and more than 7,000 stations, 23 is million among the travelers world's भी तो है। largest. Spanning over 5.5 million kilometers, India has the world's second largest road network, and by 2022, the country is 5.5 million expected to have a किलोमीटर। national highway network of 200,000 kilometers. India is 55 the second लाख। largest casting producer in the world. It is also the second largest second producer of largest? steel and cement. The construction Producer market of in steel. India will पहला grow मैं मिस nearly कर गया, twice steel as और fast cement as तो है। China up to 2030, and the country is expected to overtake Japan to become the world's third largest construction market by 2021. Thanks to these solid indicators, there shouldn't be any surprise that the Indian real estate industry is expected to be the third largest in the world by 2030. India is already the second largest mobile phone manufacturer in the world. अच्छा, It is the third largest Second producer largest. of एक सौ coal बीस and फैक्ट्री fourth है। largest producer of iron ore. The country is the world's largest cutting and polishing center for diamonds, and in Diamonds, yeah. 2017, it exported 75% of the world's polished diamonds. By 2020, it is expected to become the fifth largest manufacturing country in the world. In 2017, India became the fourth largest auto market. It is already the largest manufacturer of two-wheelers and tractors in the world. It is the world's third largest heavy truck manufacturer and fourth largest car producer. By 2020, it is expected to become fourth largest manufacturer of automobiles globally, and the Indian auto components industry is set to become the third largest in the world by 2025. Jaguar, Range Rover, and Sangyong Ad आ गया। Motors 3, 2, 1, go। are owned by Indian companies. वीडियो हाफ भी नहीं हुई। India's national healthcare program, Ayushman Bharat, is the largest ये भी हम government-funded कवर कर healthcare चुके हैं program टॉप in 10 the ब्रांड्स world. वाली वीडियो में। The country also contributes immensely to global healthcare. India is the top supplier of doctors to both the UK and the USA. Indian hospitals receive nearly 500,000 international patients annually, and medical tourism in the country is expected to touch $8 billion by 2020. अच्छा, इंडिया में आते हैं It is difficult to इलाज कराने imagine के how लिए। the world would be able to combat AIDS without Indian input. Globally, over 80% of the antiretroviral drugs which are used to combat AIDS are supplied by India. 30% of the annual UNICEF requirement of antiretroviral drugs 80%? is supplied by It's India. drugs। Indian drugs are exported to more than 200 countries in the world. Since India is the largest provider of generic drugs globally, it is पूरी also दुनिया ही हो known गई। as the pharmacy of the 200 world. countries। 25% of all medicines in the UK are sourced from India. Pharmacy of the 40% world। of generic drugs taken by Americans are made in India. And the country's Generic massive drugs. pharmaceutical industry 25% is the UK की source of more than medicines 50% India of से है। global demand 40% for various US है। vaccines. India's rich culture and spiritual foundational wisdom are its big assets. It is the land which gave birth to pro-environment traditions like aparigraha. It shouldn't be a surprise that India secured the best score in the Green Dex survey and emerged as one of the least wasteful economies. This is a Karbi traditional home. These traditional Least tribal wasteful homes are economies. one of the finest displays of India's rich heritage. They represent a combination of intelligent engineering and sustainable living, which is totally relevant in the 21st century. हिस्ट्री तो है The ना एक Indian बहुत state, पुरानी। Sikkim, has become the role model for the entire world in organic farming.
It is the world's first 100% organic state. Fruit and vegetable production, tea production, silk 100% production, organic state. bamboo genetic resources. दुनिया की सारी जो India ranks second in ग्रेन the सब्जियां world वगैरह है in सब वो all सारी these ऑर्गेनिक departments. 100% organic होना बहुत बहुत In बहुत बड़ी other बात है। agricultural commodities like rice, wheat and pulses, it is मैं also समझता हूँ ना among इस the बात top को। मैं producers. हम तो खुद ऑर्गेनिक With as plants many वगैरह as आते हैं 8,000 species, India is the world's second largest exporter of medicinal plants. It is the world's largest producer of dairy, and globally, ये तो India मैंने has पढ़ा been the था। पता नहीं largest कितने milk बिलियन producing डॉलर country अर्न since करता है इंडिया 1997. हर्ब्स को एक्सपोर्ट After the करके United States, मेडिसिन में Japan, and इस्तेमाल China, India इस is the हिसाब से fourth तो largest producer लार्जेस्ट of मिल्क agrochemicals. प्रोड्यूसर। Some of the biggest solar farms of the world are located in India. The Indian renewable energy sector is the fourth most attractive renewable energy market in the world, and the country is well positioned to surpass its 2022 renewable energy target. In Paris, India pledged that by 2030, 40% of its installed capacity will come from renewable sources, and it is expected that by 2050, renewables will supply 75% of electricity in India. 2030 Thorium is considered to be the nuclear fuel of the future, and India has one of the largest shares of global thorium reserves. India is expected to have 30.5 million international tourist arrivals by 2028, but its real potential is a lot more. With 26 biotic provinces, 10 biogeographical zones, more than 30 World Heritage Sites, a 7,000-kilometer coastal line, as well as its mountains, deserts, rainforests, islands, volcano, salt flats, wildlife, and tribal habitation, India is incredibly diversified. Its 29 states, 7 union territories, 4,000 cities, and 600,000 villages have a lot of hidden potential. Many of them are not yet fully explored and discovered. In 2017, India ranked first in the world's first digital traveler rankings when it was revealed that it had the most digitally advanced travelers. There is no denying that India is emerging as a lucrative expat destination. It is the 12th best country to live in as an expat. It is far ahead of countries like the USA, the UK, Japan, and China. India-based expats earn an average of $176,000, which means that they are the second highest paid in the world. On the other hand, Indians who are living outside India have performed exceptionally well and have rightfully earned the tag of model minority. In both the UK and the USA, the Indian community has been outperforming other ethnic groups academically and economically. India is also the world's top recipient of remittances, as its diaspora sent $79 billion back home in 2018. The country is also expected to benefit from the reverse brain drain. From its film industry to its space agency and defense, India's growth can be seen across a very broad spectrum. In terms of ticket sales and number of films made, India has the world's largest film industry. India is a nuclear-armed nation, and its military is the fourth strongest in the world. Its space agency, ISRO, has already reached Mars, and now it is planning to send humans to space. For its commercial arm, Antrix, it has launched hundreds of foreign satellites for multiple developed and developing nations. This may all sound very impressive, but for India, this is just the beginning. It wants to attain self-dependence in core technologies, and it wants to participate in the fourth industrial revolution. But will India be able to earn its rightful place in the powerful and influential global forums which are dominated by the Western nations? Will India be able to help those forums become truly global and truly democratic by challenging the existing supremacy of the Western powers? Will India be able to protect its citizens from tech colonization? And will it be able to have a stronger voice in the global media? Will India be able to protect its identity from the Western religious and commercial monocultures which are homogenizing its cultures and diversity?
Will it be able to learn the best global practices, and will it be able to preserve the best that it has? Unlike others, will India be able to use its science for global public good and not just for commercial returns? Those who are concerned about India's economic development's impact on the environment should also understand that India's historical emissions are extremely low in comparison to other global powers. Just because the financial prosperity of many developed nations and colonial powers came at the cost to the environment and through the misery of colonized nations, it does not mean that there are no other ways to walk the path to prosperity. Through its approach of universal familyhood, which is rooted in its ancient foundational wisdom, India is practicing what others could only preach. The world should take note of that. See you again. अच्छा ऐड आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो भी तकरीबन एंड हो चुकी है। ऐड आ गया। अच्छा मेरे ख्याल में वीडियो ऑलमोस्ट एंड है। वीडियो डिस्क्लेमर और डिस्क्लेमर लास्ट में डाला है। डिस्क्लेमर चले जी। एक हमारे जाने वाले हैं यूसुफ भाई, अगर उन्होंने हमें ना रोका होता तो हम कम से कम 20 मरतबा इस वीडियो को बीच में रोकते। एक तो वीडियो लंबी बहुत है और हर मिनट पे इसके इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा म्यूज़िक चला, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कुछ इमेजेस आई, कुछ इस तरह नहीं। कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक के बाद एक, और यकीनन कोई भी याद नहीं कर सकता है। कोई सुपर ह्यूमन ही होगा जो याद करेगा और उस पर कमेंट देगा। तो कमेंट देना तो बहुत ही दे सकते हैं, मुश्किल है। तो मैंने जो एक समराइज किया है इसको, जो मेरी नज़र में है वो ये कि एक तो वर्ल्ड लार्जेस्ट का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड नंबर पे या कभी फिफ्थ नंबर पे भी टॉप 5 में हमेशा का वर्ड यूज़ हुआ है, और वर्ड्स फर्स्ट और ये इस तरह की चीज़ें जो यूज़ हुई हैं और वो कंटिन्यू इतनी देर तक यूज़ हुई हैं इतनी फील्ड्स के अंदर। तो मतलब मुझे लगता है इंडिया का मीडिया जो है वो उस तरह नहीं है, या तो उसको उतनी कवरेज नहीं है वर्ल्ड में जिस तरह BBC, CNN जो है ना, वो अपनी छोटी सी चीज़ को भी इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। वो इतनी जगह पे आगे है, हम बराबर में रहते हैं, चंद 100 किलोमीटर का फासला है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और हमें नहीं पता ये बात है। और सोशल मीडिया से जाके हमें ये बातें पता चलती हैं। यकीनन पाकिस्तानी मीडिया तो ये नहीं दिखाएगा, ये इंडिया का मीडिया ही दिखाएगा ये सब चीज़ें, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो कवरेज का थोड़ा सा मसला आ रहा है यहाँ पे। इंडियन मीडिया भी मेरे ख्याल है सही कवर नहीं कर पा रहा, जो कि सोशल मीडिया यूजर्स हैं। अब देखें, मुझे ये पता है स्वीडन का कि वो 25 में जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो नहीं बनेंगी सारी, और वो पेट्रोल वाली कार बनना बंद हो जाएंगी। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें बताए, लेकिन इंडिया का नहीं पता था कि जी कितना बताया था, 35% ऑलरेडी वो रिन्यूएबल एनर्जी पर है, तो और 75% शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह बताया गया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की, इसमें ज़्यादातर प्रिडिक्शंस भी की गई हैं कि तो बाय 2030, मतलब जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से, और ये 2019 में वीडियो बनी है, तो कोरोना का इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो पेस मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कब तक रहेगा कोरोना। लेकिन जाहिर बात है पेस अगर स्लो होगा तो खाली इंडिया का नहीं हुआ, दूसरे कंट्रीज का भी रहेगा, तो इफेक्ट तो सेम रहेगा। लेकिन उन्होंने जो बताया ना कि 2030 में यहाँ तक पहुँच जाएगा, 2030 में इतने %, तो वो पेस मैं बोल रहा हूँ कि वो स्लो हो जाएगा। 5 साल आगे लगा लें। हाँ, 5 साल या 2 साल आगे लगा लें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना आगे निकल चुका है ये तो पता नहीं। मल्टीपल इतने प्रोजेक्ट इन्होंने गिनवा दिए कि इसमें भी आगे, उसमें भी यूएसए को ओवरटेक करने वाला है, यूके को ओवरटेक करने वाला है। कंस्ट्रक्शन और कुछ बातें मुझे मालूम है, लेकिन एक ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला मुझे बहुत ही वो दिलचस्प लगा। 100 सिक्किम स्टेट थी कोई, 100% मतलब ऑर्गेनिक है। बहुत हैरानगी की बात है, ये बहुत इतना आसान नहीं है। मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे थोड़ा बहुत काम किया, एक्वाफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक सिस्टम के ऊपर मैंने काम किया। मैं ग्रेजुएट भी बायोलॉजी क्या कहते हैं बॉटनी से हूँ, तो इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो स्पेस इंडस्ट्री हो, और ट्रेन सिस्टम है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ हर्ब्स का मैंने पढ़ा था, अभी नहीं, ये इस वीडियो से भी पहले मैंने पढ़ा था
खास तौर कितने पे बिलियन डॉलर्स इंडिया कमाता है एक्सपोर्ट करके। हर जो मेडिसिन में इस्तेमाल होती है ना, ईस्टर्न मेडिसिन और वेस्टर्न दोनों में, वो एक्सपोर्ट करता है। अभी तो पता चला कि फार्मेसी की भी कितनी बड़ी बड़ी, एक तो वर्ल्ड्स फर्स्ट कुछ बताया था फार्मेसी, वो जाहिर है कि इतनी इन्फॉर्मेशन हम ग्रैप्स नहीं कर सकते। और एक और चीज जो इसमें बताया था उन्होंने कि 25% यूके की जो मेडिसिन है वो आउटसोर्स हुई है इंडिया से, और 40% यूएसए की खास कैटेगरी शायद बताई थी, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन फिर भी 40% यूएसए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है अब इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो और किसी मुल्क को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या सुपर पावर या नियर टू सुपर पावर होने के लिए और क्या चाहिए? बस यही फैक्ट्स हैं जो इस वीडियो में अगर सुपर पावर कंट्रीज आप पे डिपेंडेंट होने लगे, आपसे इंपोर्ट करने लगे, मतलब सुपर पावर रॉ मटेरियल की बात नहीं है ये एक तो प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट है। चलें तो फिर मेरे ख्याल में वीडियो को रैप अप करते हैं, लेकिन नहीं अब तक की सबसे अमेजिंग मुझे वीडियो ये लगी है। सिटीज अमेजिंग लगे, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन फैक्ट्स वाइज अमेजिंग जो है, द मोस्ट अमेजिंग वीडियो आई हैव एवर सीन। तो वीडियो को रैप अप करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी लाइक करें, और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग किसी वीडियो पे रिएक्शन दें, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भी 82% हमारी जो व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो सब्सक्राइब तो करें प्लीज। सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, बाय।